Palak, Rutva, Nishant, Forum, video on, come on. Priya Gandhi, Nishant तो ठीक है यार on, not well. Pujan, Forum, Priya Gandhi, चलो video on. 30th sum, okay. Suspense account shows a credit balance of 1278. Very first line they have given it to you, served on plate, right? Suspense account shows a credit balance, straight forward दिया हुआ है, तो कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा बैलेंस दे दिया आपको सस्पेंस का. We'll simply rectify and try to tally the suspense. Let's see if it tallies. So draw the wrong, reverse, correct and rectified. Wrong, reverse, correct and rectified. Rectified के लिए journal proper on the right hand side. Narrations you can skip. Narrations are comfortable, right? So keep the videos on. सबसे पहला sum number 30th, first one. Let's see what is given. Come on. First sum, first one of 30th sum, 3030, page number 101. Let's start. Carriage on machinery is debited to carriage account. Hitanshi, what is the correct entry for carriage on machinery? Carriage to cash account. Is it मशीन खरीदने पे हुआ है, मशीन परचेज करने पे जो भी एक्सपेंस होता है आप क्या करते हो? Bank to मशीन परचेज किया है ना, उस पे जो भी एक्सपेंस होता है परचेज के वक्त, व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू? Add up to the cost. So what should be the entry? machine to cash. मशीनरी टू कैश. मशीन खरीदने के वक्त जो भी एक्सपेंस होता है या एसेट खरीदने के वक्त जो भी एक्सपेंस होता है, एड अप टू द कॉस्ट. So many times you have done. So machine to cash, okay. What is the wrong entry now? By mistake we have debited it to carriage. Wrong entry क्या बनेगा आपका? Carriage to cash. Carriage to cash. Error of principle. Reverse it, you get cash to carriage. When you cancel out something, you can cancel out cash. What are you left with? You're left with machinery to carriage. Machinery to carriage, that's your rectified entry. Machinery to carriage. Sir, we need to write the like being machinery. The Narration. Yeah, the narration. Narration we can skip. Narration we can skip. Narrations are simple now. Concentrate on entries. Okay. Next one. Goods purchased from Sahani 531 is debited to his account as 351. पहले तो goods purchased from Sahani. Isha, what is the correct entry for goods purchased from Sahani? purchase to Sahani. Purchase to Sahani. Purchase to Sahani. That is 531. Correct. Perfect. It was debited to his account as 351. So Isha, can you tell me the wrong entry? सहानी को डेबिट दे दिया है 351 से. Purchase to Sahani to dash. परचेज टू सहानी के परचेज और सहानी डेबिट. Purchase Sahani to dash. हाँ, परचेज सहानी टू डैश. परचेज इज राइट, करेक्ट. परचेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज इज परफेक्ट. तो परचेज में 531 ही रहेगा. सहानी को हमने गलती से क्रेडिट देने के बदले डेबिट दे दिया 351 का.
that was an error of commission, wrong side and wrong amount. Total becomes 882. Total becomes 882. Reverse it, you get dash to purchase to Sahani. That's 882, 531, 351. And you cancel out something, you can cancel out purchase entirely. And what's your rectified entry? Sahani on the credit will be added. So you are left with, I think, suspense to Sahani. Suspense to Sahani. That's 882. Suspense to Sahani, that's 882. Is that clear? Suspense to Sahani, 882. Third one, Gargi, a transistor purchased. Second one clear है सबको? Sahani वाला, Sahani को क्रेडिट देने के बदले डेबिट दे दिया था, ठीक है? Gargi, third one, a transistor purchased by proprietor for his personal use is debited to general expense account. Is the correct entry for Drawings, drawings to cash. cash? Perfect. That is correct. The wrong entry is general expenses to cash. Perfect. Wrong entry is general expense to cash. A transistor used to use earlier 10, 12 years ago, 15 years ago. Okay, radio के जैसा होता था. तो transistor for personal use है तो drawings to cash and wrong entry हो गया general expense to cash. Reverse is what? Cash to general expense. Error of principle हो गया यहाँ पे. Drawings you mixed up with general expense. Cash gets nullified and you're left with drawings account debit to general expense account. Drawings to general expense, that's 100 rupees. Drawings to general expense, that's 100 rupees. Okay. Personal use वाला transistor गलती से हमने expense में debit कर दिया. Drawings to general expense, that's your rectified it. Got it? Fourth one, a TV purchase for works canteen is debited to sundry expense account. Forum Malavia, a TV purchased, what should be the correct entry for a TV purchased? So what account do we use for TV? TV. The TV account to cash account. Sorry, correct. TV to cash, TV, computer. Is Wrong our entry is sundry expense to cash. perfect. Correct entry था Advertisement also, no? for TV. नहीं, TV for works canteen है ना वो. This is not for publicity or exhibition. If you buy it for exhibitional purpose, then it is advertisement. This TV is for works. Works मतलब अपने फैक्ट्री का कैंटीन. वर्कर्स के लिए फैक्ट्री के कैंटीन में रखते हैं ना कभी कभी टीवी, कैंटीन में टीवी देखने के लिए, तो बिजनेस पर्पस के लिए. तो कंप्यूटर, टीवी, if it is for business use, then it is asset, right? If you use for publicity display purpose, then it is advertisement. So here it will be TV to cash. What will be the wrong entry? Sundry expense to cash. Perfect. Again, which type of error? Principal error. Reverse it, you get cash to sundry expense. 4850. And you can cancel out cash. What are you left with? You're left with TV to sundry expense. TV to sundry expense. That's 4850. Okay. Maya, Preet, Pujan, Gideon, Bansi. Fifth one. Expenses incurred on whitewashing the factory and office building is debited to building account. Veer, can you tell me the correct entry for this? What account do we use? Whitewashing? Building maintenance. Building maintenance. Building maintenance to
Or you can also use repairs and maintenance. Yeah, that's what I was thinking. Yes, absolutely right. Repairs and maintenance or building maintenance to Cash. I was cash. of repairs. Repairs. Yeah. to cash. Yeah, only repairs are also fine. Only repairs are also fine. Repairs to cash, building repairs to cash, building maintenance, repairs and maintenance to Okay. cash. That will be 3,500. Yeah, 3,000. What is the wrong entry? Cash is the wrong entry. Building to cash. Perfect. Reverse will be cash to building. Cash to building, And rectified will be building maintenance to building 3,500. building maintenance to building. That's your rectified entry. Building maintenance to building. That's your rectified entry. 3,500. Again, it was error of principle. Error of principle. Simple. Error of principle, that was got that. So whitewashing means that whitewashing is that chuna what you put on that building. Putting plaster extra. Not plaster. Oh, Filling up the cracks. filling up the cracks and all. Chuna lagate na, mainly whitewashing is that white. That is chuna. So that's your maintenance expense, repair expense of any asset. You can put it under maintenance, repairs and maintenance also, or only repairs are also fine. गलती से इसको बिल्डिंग में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया. ओके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का मिक्सअप, एरर ऑफ प्रिंसिपल था. Sixth one, purchase of one electric motor from Rajesh for the factory costing 509 entered in the purchase book as 905. Assume it to be a credit transaction. और नहीं भी दिया होता तो भी would have assumed it's a credit transaction because purchase book was given in the question. So Maya, would you like to answer what is the correct entry? Electric motor account debit to Rajesh. Correct. Electric motor or machinery account also you can put over here to Rajesh. Electric motor to Rajesh, yeah, machine to Rajesh, that is 509. What is the wrong entry? Was entered in the purchase book as 905. Electric motor 905 to dash to Rajesh. No. Think. ये एंट्री कौन से जर्नल में जाना चाहिए था? Motor to Rajesh should have been entered in which journal? Which subsidiary book you should have entered this in? It should have been entered in the journal proper. Journal proper में enter करना था और गलती से कौन से बुक में किया हुआ है? Purchase book. तो purchase to Rajesh. Purchase to Rajesh हो जाएगा ना? Purchase book, journal change हो गया है. Remember? When you change a journal, entire entry will be of that new journal now. So it will become purchase to Rajesh. और खाली purchase में गड़बड़ है, खाली राजेश में गड़बड़ है कि दोनों में गड़बड़? दोनों में गड़बड़. Did you understand? Purchase book करना था journal proper में, उठा के डाल दिया purchase book में. Entire entry will be of credit purchase now. And दोनों में the amount will be 905. It is not a posting error in one account. Okay. राजेश में गलती से पोस्ट हुआ होता तो राजेश रॉन्ग होता, परचेज अकाउंट में डाला होता परचेज रॉन्ग होता. यहाँ पे परचेज बुक में ही कर दिया, जर्नल में कर दिया तो बुद्ध अकाउंट से रॉन्ग, उधर राजेश लिखा है तो राजेश में भी 905. समझा सबको? सो परचेज टू राजेश 905, बुद्ध अकाउंट्स आर रॉन्ग बिकॉज जर्नल में ही रिकॉर्ड करते वक्त मिस्टेक किया है. रिवर्स करो, यू गेट राजेश टू परचेज, दैट इज 905. बुद्ध अकाउंट्स इट इज 905. And your rectified entry should be, I think Rajesh, you can cancel to the extent of 509. So you are left with, I think 400 minus 9 is 3. 400 minus 14, 386 बचता है. Rectified entry would be electric motor debit 509
Rajesh debit 386 to purchase will be 905. That should be your rectified entry. Correct? Electric motor, Rajesh to purchase. Did you all get the mistake? क्या mistake हुआ समझ आया? But it will be 396. 396. अच्छा 396 calculation error. Sir, in the wrong entry, हाँ, the amount when Rajesh is credited should be 509. no, 905 only. The entire amount is wrong. It is not purchase account. Read na. They have given in purchase book. You made a mistake in purchase book. So what you did, you had to put it in journal proper. You by mistake took a purchase book, wrote there Rajesh 905. वहीं से राजेश में जाएगा पोस्टिंग बाय परचेज 905. ऐसे में क्या परचेज का सेल्स बुक का परचेज बुक में, तो जो बुक में एंटर किया वही बुक का अमाउंट, दोनों अकाउंट में सेम अमाउंट और वही बुक का एंट्री हो जाएगा. जर्नल का एरर, so both the accounts are wrong. Posting error, debited, credited, so one account will be wrong. Clear? Jia Savla, table calendars costing rupees 200 purchased and distributed to the customers as New Year gifts are debited to stationery account. What should be the Advertisement to cash. Yes, very good. Advertisement to cash. Why do you distribute calendars as New Year's gift for advertisement? So correct entry is advertisement to cash. What is the wrong entry? Stationery to cash. Stationery to cash. Stationery to cash. Perfect. Error of commission. One expense के जगह दूसरा expense you put. Reverse is cash to stationery and cash gets cancelled out. So you are left with advertisement to stationery. Advertisement to stationery, that's 200. Advertisement to stationery, that's 200. Is that clear? Advertisement to stationery, that's your rectified. 500 received from Modi and Company Bombay is credited to Modi and Company Baroda. Quite simple, right? What is the correct entry for receiving from Modi and Company Bombay? The correct entry will be what should be the correct entry for receiving from Modi and Company Bombay? Modi and Company Bombay. No Cash to Modi and Cash Company to Bombay. Modi and Company. Cash to Modi and Company Bombay. Cash to Modi and Company Bombay. That's 500. What is the wrong entry? Cash to Modi and Company Baroda. खाली बॉम्बे का बड़ोड़ा हो गया. Reverse is Modi and Company Baroda to cash, and you can cancel out cash. You are left with Modi and Company Baroda to Modi and Company Bombay, 500 rupees. That's your rectified entry. Okay, commission error था, पार्टी का नाम इंटरचेंज हो गया. पार्टी का नाम इंटरचेंज हो गया, एरर ऑफ कमीशन. लास्ट वन थोड़ा दिमाग लगाने वाला आइटम है. लेट्स सी. Rupees 396 received on account of commission was not posted to the ledger at all. What should be the correct entry? Commission account is undercasted. No. Yes, you can think that way, but you can do it entry wise also. Rectified part would be same. Cash to commission. Correct entry is cash to commission. Cash to commission, that is 396. Got it? All of you. There will be no wrong No, it will be No, cash no, to no, dash. no. See, Because that's it is posted in the cash book, yeah. but for the commission account it is not posted, so it will be cash to dash. Why do we think like that? Why do we think like that? Why do we think that cash? Because cash book is a journal as well as a हाँ, ledger. उधर क्या दिया है? It is not given that cash book में record नहीं हुआ है. तो ये common mistake होता है. इसके लिए मैंने बोला थोड़ा alert हो जाओ. Posting error है. Posting मतलब ledger में एक account में mistake है. Can you all see that? तो journal अगर cash book में ही record नहीं हुआ होता, cash book was a journal, right? Subsidiary. अगर उसमें ही record नहीं हुआ तो complete omission. But cash book में हुआ है और आपने इसमें नहीं किया है, ledger में post नहीं किया है. तो कौन से वाले ledger में post नहीं किया है? Cash में नहीं किया है कि commission में नहीं किया है?
Commission. कमीशन में नहीं गया, कैश बुक में हुआ है मतलब कैश अकाउंट में हो गया है। याद है बताया था सब्सिडरी वाला फंडा, तो सब्सिडरी बुक वाला पार्ट राइट ही है, तो कैश इज राइट, टू डैश हो जाएगा, बराबर है। एरर ऑफ व्हाट वाज द एरर, व्हाट वाज द टाइप ऑफ एरर, पार्शियल ओमिशन, करेक्ट। पार्शियल ओमिशन था, कैश में हुआ, कमीशन में नहीं हुआ। विराली को समझ रहा है? विराली, रुतवा, नाउ कैश इधर कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ योर रेक्टिफाइड एंट्री, दैट इज व्हाट, सस्पेंस टू कमीशन। ओके, So, sir, can we do it directly? हाँ हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू, रॉन्ग रिवर्स करेक्ट सब कॉलेजेस के लिए जरूरत नहीं है, ऑल कॉलेजेस आर नॉट गोइंग टू चेक दैट, तो ओनली एनएम, नहीं सॉरी, ओनली, yeah, only NM prefers that you do that wrong reverse correct entry, even Mitibai allows it. तो rectified entry तुम्हारा perfect होना चाहिए, that is the ultimate answer, rectified entry narration के साथ इसका marks है। Wrong reverse correct is for your support, so you arrive at the correct rectified entry properly. Make a suspense, come on all of you, make a suspense, check whether it tallies. So I don't get this part, that cash to dash. How does it came? Because see what have they given, commission received was not posted in the ledger. Is it given that it was not recorded in the cash book? ऐसा नहीं दिया, कैश बुक में तो हुआ है, लेजर में पोस्ट करते वक्त नहीं हुआ, लेजर में पोस्टिंग नहीं हुआ है, बराबर इतना दिया है। तो अगर हम कैश बुक, तुमने कैश बुक किया, कैश बुक रिसीट पेमेंट, उसमें 2 कमीशन वो रिकॉर्ड कर लिया है तुमने 396, फिर पोस्टिंग किस में करोगे, कमीशन में करोगे, बाय कैश। विल यू डू इट separately in the cash account also? Will you do a separate posting in the cash account? No, because that itself is cash account. So मतलब if you have entered it in cash book, you have entered it in cash account. Cash account में तो हो गया, इसमें नहीं हुआ है तो other account, commission में नहीं। अगर इधर ऐसा दिया होता कि this was not entered in the cash book, cash to commission was not entered in the cash book, cash book was a journal only ना, उसी में enter नहीं किया तो दोनों में enter नहीं हुआ, कैश में भी नहीं हुआ और कमीशन में भी, तो पोस्टिंग वहीं से होता है। तो अगर जर्नल में ही नहीं है तो कंप्लीट ओमिशन, जर्नल में है लेकिन पोस्टिंग एरर है, मतलब सेकंड अकाउंट, कमीशन, कैश इज परफेक्ट। So cash to dash, dash to cash, suspense to commit. Check whether it tallies, suspense account. Check करो, small suspense you make it quickly. Suspense में कौन सा बैलेंस आएगा, तो आई थिंक क्रेडिट बैलेंस, बाय बैलेंस BD, they have given it on top 1278 and suspense to Sahani, तो to Sahani suspense वाले posting कर लो, this is 882, then last one to commission, that's 396. I think your suspense should tally on 1278. It is tallying on 1278. Only 2 entries in suspense and it tallies 2 entries in suspense. Got it? Clear with that? That was your sum number 30. Next one. Sum number 18. Sum number 18, all of you. 18th sum. Sum number 18. I want you all to try sum number 18 on your own. All of you. I'm giving you 10 minutes. Sum number 18, wrong reverse correct rectified without narration. Sum number 18 खुद से try करना है सबको. Start. Bansi, forum, keep the video on. This will be out. Ruchi,
Pujan. Last time. Bansi, Forum, Gideon. We have to make a suspense account here. No need of suspense account. No need of suspense account. Just wrong, reverse, correct, and rectify. Wrong, reverse, correct, rectify. Just make that. Forum Nathani, Bansi Joshi. Bansi, are you there? Forum, are you there? Sir, in the first one, suspense account won't come. Purchases dash to cash. It would be purchases to cash directly. No, posted to purchase account दिया है, purchase book नहीं है. सोचो क्या होना चाहिए wrong entry. Correct तो मिला होगा सबको. What is the correct entry? Furniture to cash. Furniture to cash. What is the wrong entry? dash purchase account to cash. हाँ, purchase dash to cash. It was posted to purchase account. देखो, purchase book नहीं है, purchase account है. तो furniture में लिखने के बदले purchase में post कर दिया और वो 600 किया. Cash is right. तो purchase dash to cash. It's a cash purchase. ना cash book में हुआ है. Cash book से posting error is always in the other account. Furniture के जगह purchase में डाल दिया और amount भी wrong है 600. तो correct था furniture to cash 6,000. Wrong is purchase 600 dash 5,400 to cash 6,000. Then reverse and then rectify. करो.
सर द फोर्थ एंट्री नो एडजस्टमेंट मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, नो एडजस्टमेंट मतलब कंप्लीट होना चाहिए। नो एडजस्टमेंट इन द बुक्स, नो एंट्री इन द बुक, किया ही नहीं है। We have done 17th sum. Yes, sir. Getting this sum? Bolo, any doubts? Tell me. Clear? In Ah, last sum, what will be the wrong for the soil sales of furniture? लास्ट वाले में क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। You have sold furniture on credit to Dinesh, right? तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए दिनेश टू फर्नीचर। You have wrongly entered it in sales book. Again, जर्नल चेंज कर दिया, सेल्स बुक में डाला, मतलब सेल्स बुक का एंट्री हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स का एंट्री। व्हाट इज क्रेडिट सेल का एंट्री? दिनेश टू सेल्स। जर्नल ही चेंज कर दिया तो द एंट्री विल टेक द फॉर्म ऑफ न्यू जर्नल। ऑलराइट, मिला सबको ये वाला? एनी डाउट्स? So in the E1, we don't have to write the correct entry, right? ई ई Yeah, E. ई Like वाला तो टोटलिंग एरर है, उसमें होगा ही नहीं ना करेक्ट। टोटल Okay. पोस्ट करने का एंट्री कहाँ होता है? देयर इज नो एंट्री, दैट इज जस्ट अ फ्रेज यू राइट, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, sorry, by sundries as per sales book. That's not an entry. Okay, so thank you. That's a casting error. Totaling error means casting. Total कहीं पे भी दिखा मतलब casting error. Comfortable? अच्छा, उसके बाद I want you all to take now. I think we are left with first sum, right? First sum अपना बाकी है sheet. Page number 94. First sum is left out, right? Take out first sum. Okay. ये वाला मिल रहा है पहले सबको? 1 2 3 4 5 6 clear all of you? Any doubts? All clear? First sum चालू करो खुद से। First sum also you have to try it on your own. Sum number 1. Come on, use your brains. Wrong, reverse, correct, rectified. No suspense account again. Wrong, reverse, correct, rectified. Sir, it becomes very confusing when ledger comes in the picture. So they say it was not posted, so what is to be done? We have to use that account only. हाँ, that account. Not posted मतलब ledger वाला, that account. Book नहीं, book में नहीं हुआ मतलब complete operation. Journal में नहीं हुआ मतलब complete operation. Posting error is always in single account.
first sum. Any other doubt in sum number 18? Comfortable with that? 18th sum. The first sum, try karo first sum. Sum number 1. Sir, remuneration can be put to salary account. Remuneration, yeah. Factory supervisor salary or factory supervisor salary you can put. Remuneration is salary. Barabar. Supervisor salary or factory supervisor salary. Omitted to be posted in ledger book. Ledger मतलब कौन से account में नहीं हुआ है? Other side of the cash. हाँ मतलब कैश इज राइट, वो फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी में नहीं हुआ है, समझा ना? ये पार्शियल ओमिशन. Sir, in the fifth one, can we record directly the rectified entry? You have to record it in the fifth one directly. टोटलिंग एरर है ना, टोटलिंग एरर का कोई एंट्री नहीं होता. टोटल 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 कहीं पर भी ट्रांजैक्शन में टोटल कास्टिंग दिखा मतलब इट्स अ टोटलिंग एरर, कास्टिंग एरर. नो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री फॉर दैट. First one is also a casting error. Second one. So what is the meaning of third entry? Credit of motor cash. क्रेडिट साइड ओवर कास्ट मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है वो ज्यादा बता दिया, ओवर टोटल कर दिया. क्रेडिट ज्यादा हो गया ना, उसको अभी कम करना है ना. हाउ डू यू रेड्यूस अ क्रेडिट?
Increasing the debit. मोटा काटो सस्पेंस. क्रेडिट ओवरकास्ट तो डेबिट दे दो, डेबिट ओवरकास्ट तो क्रेडिट दे दो, क्रेडिट अंडरकास्ट तो और क्रेडिट दे दो, डेबिट अंडरकास्ट तो और डेबिट दे दो. जो साइड में गड़बड़ है उस साइड पे इफेक्ट दे दो. दूसरा सेकंड इफेक्ट विल गो टू सस्पेंस, वन साइडेड एरर, कास्टिंग एरर. हाँ बोलो, पहुंच गई. चेक. That is first sum, right? First sum, yeah. I guess you entered 6, 7, 8 from second sum. Huh? Yeah, the 6th, 7th, and the 8th entry. Yes, sir. अच्छा, okay. Which one I entered from? Second. 6th one. Sixth one से मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? अरे रे रे. हाँ, ऑफिस रेंट.
Sir, can you explain the fourth one? Fourth one. Sold goods to Sunit was entered in sales book but was not posted to his personal account. ये वाला Sunit to sales was the correct entry. Sales book में डाला but Sunit में नहीं लिखा तो dash to sales. Reverse is sales to dash. Rectified is Sunit to suspense. Partial omission, right? So, and can you explain the seventh one? Seventh one. A, B, C, D, E, F, G. Sold old furniture and received 3390 was debited to furniture account, though correctly entered in cash book. What is the correct entry for selling furniture? Cash to furniture. Cash to furniture 3390. अभी क्या किया है? Furniture को debit दे दिया गलती से. Cash is right. What is the wrong entry? Cash. Furniture to cash. No. अरे cash is right only. Why are you crediting cash? It will become cash furniture to dash ना. Yes. पोस्टिंग एरर है, फर्नीचर में गड़बड़ है. फर्नीचर को डेबिट दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि कैश को क्रेडिट दिया है. कैश इज राइट ओनली. कैश फर्नीचर टू डैश, रिवर्स डैश टू कैश टू फर्नीचर, रेक्टिफाइड इज सस्पेंस टू फर्नीचर. डबल अप. Okay, thank you, sir. यस वीर, यू हैव डाउट? वीर क्या चालू है कॉलेज में? हो गया जर्नल? हाँ. जर्नल फिनिश? लेजर स्टार्टेड? Yeah. We did 2 sums and one that there was a sum on Kalu and Balu. Like, हाँ, Kalu's account in the books of हाँ. Balu, Balu's account in the books of. yeah, we are doing that. Okay. और टेस्ट कभी से तुम्हारा जो बोला था वो स्मॉल टेस्ट फर्स्ट चैप्टर वाला बोला था ना, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ऐसा कुछ? She didn't take it on. She didn't take it. She just wanted us to study. ले. Okay, come on. Check the answers. बोलो, any doubt? Anyone? छापो मत, खुद से आना चाहिए. ये आएगा तो टेस्ट में जमेगा. अच्छा, टेस्ट is there on 26th Tuesday and trying to keep it offline. Okay, I'll advise कि majority या सब लोग आ सके तो सब लोग, it's best to give offline. ऑफलाइन का प्रैक्टिस जो आपको होगा ऑनलाइन में बहुत फर्क पड़ जाता है उससे, स्पेशली टेस्ट्स. लेक्चर तो चलो ठीक है, सब नोट्स वोट्स लिखना है आपको. टेस्ट एनवायरनमेंट आपका जितना ऑफलाइन होगा उतना आपको बोर्ड्स के लिए या कॉलेज एग्जाम के लिए इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. So I'll send a consent form in the parents group today. So just fill up that form and I'll let you know by tomorrow or Saturday exactly online है offline है कैसा है. टेस्ट तो है पक्का on Tuesday, that's for sure. तो टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैंने बोला ना आफ्टरनून रहेगा. आफ्टरनून का स्लॉट मैं आपको एडजस्ट करके देता हूँ, कुछ क्लैश नहीं होगा आपका. 2 slots will have 1 hour का, 2 to 3, 4 to 5 या 3 to 4, 4 to 5 ऐसा कुछ. Give you the timings accordingly. हो गया ये वाला फर्स्ट सम डन? So Sir, can you wait. explain me ninth Sir, one? it's okay. हाँ, ninth one. That was Firoz wala. Cash paid to Firoz was posted twice to his account. What is the correct entry for cash paid to Firoz? Firoz to Ash. Firoz to cash 2150. It was posted twice in his account. जब उसमें 2 बार लिख दिया फिरोज में. So wrong entry will be Firoz to Dash. फिरोज में 2 बार लिखा है, कैश में 1 बार तो लिखा ही है ना, कैश तो राइट ही है ना. Firoz dash to Firoz- Dash. फिरोज टू कैश टू डैश. फिरोज में 2 टाइम्स है डेबिट साइड पे. फिरोज में है ना 2150 का लिख दिया 4300. टू कैश 2150, टू डैश 2150. Got it? गड़बड़ इज इन फिरोज, कैश इज राइट. Whenever गड़बड़ इज इन वन अकाउंट, कैच दैट अकाउंट ओनली. दूसरे वाले को पनिश मत करो, दूसरा वाला अकाउंट राइट है. ठीक है. तो फिरोज टू कैश टू डैश, रिवर्स डैश कैश टू फिरोज, रेक्टिफाइड इज सस्पेंस टू फिरोज 215.
और बोलो, any other doubt? So posted to debit side मतलब it डेबिट came कर to दिया. the पोस्टेड टू डेबिट मतलब वो अकाउंट डेबिट हो गया. अभी वो प्रवीण वाला ना, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर रिसीविंग क्रॉस चेक फ्रॉम प्रवीण? bank account debit to Praveen. बैंक टू प्रवीण 4500. इट वाज डेबिटेड टू प्रवीण. करना था प्रवीण को क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो क्या होगा? रॉन्ग एंट्री. Bank account debit Praveen account debit to dash. बैंक प्रवीण टू डैश. बैंक इज परफेक्ट, प्रवीण में गड़बड़ हो गया, क्रेडिट का डेबिट. रिवर्स इज डैश टू प्रवीण टू बैंक, रेक्टिफाइड इज सस्पेंस टू प्रवीण. सस्पेंस टू प्रवीण 9000. डबल अप. Suspense to Praveen 9000. Can you just tell me what all sums are left from the class textbook? So second sum is left. Second one and second one हुआ है शायद. Yes, sir. Why? हुआ है. Sir, second was the first one we did. First one तो हो गया ना. Second sum भी हो गया. और I think fourth या fifth में से एक बाकी है. Fourth we have Fourth. not done mostly. Fourth बाकी है ना. Fourth sum is left. और तो fourth के अलावा और कौन सा? 10, 11. 10 and 11. 4, 10, 11 और आगे 4, 10, 11 और आगे बस 4, 10, 11. 3 sums are left. Now, I want you all to take standard textbook after this. First sum हो गया हो तो standard textbook ले लो सब लोग. Come to standard textbook, page number standard textbook page 261. Solve illustration 6 on your own. Standard textbook page 261. Illustration 6. All of you solve illustration 6 on your own. Standard textbook page 261. Illustration 6. Standard textbook page 261. Illustration 6. Page 261 standard textbook illustration 6. इसमें suspense भी बनाना है. पहले wrong reverse correct rectified and then make suspense. Tally it. Check whether it tallies. Can you do the last entry of the previous sum? Previous sum का last one. Purchase return undercast हुआ है. Totaling error. What is the Yeah, normal? just we increase the credit balance with Yes. respect to purchase. Casting error. Totaling error. Totaling error में कहाँ कोई entries होता है? सीधा suspense to नहीं वो purchase. मेरा डेबिट क्रेडिट साइड रखने में मिस्टेक होता है इसलिए क्यों होता है? Be alert. कंफ्यूज हो जाता है सब देखकर. Don't be confused. आराम से सोचो. Take
30 seconds. Mind will work. Go Sir, slow. page number of illustration. Page number 261. Standard textbook illustration 6. खुद से ट्राई करो विद सस्पेंस अकाउंट बनाना है. आंसर्स दिया हुआ है लेकिन रॉन्ग रिवर्स करेक्ट बराबर होना चाहिए. आंसर्स छापोगे तो इट्स मंकी बिजनेस. डजंट मेक सेंस. जस्ट फूलिंग योरसेल्फ. Ask me if you don't understand something. I'll explain. Today we'll be winding up with this rectification. खत्म हो जाएगा chapter. 2 sum बाकी रहेगा. That 2 sums I'll take with before trial balance part. Note वाला जो part है उसमें. And next lecture I'm starting with a new topic, depreciation. Very important topic, both from 11th standard and CA foundation point of view.
are entries? Or in the second one, we have to debit repairs, no? If 530 spent on repairs were posted to the debit of machinery. Yes, correct entry is repairs. Repairs to cash. But amount in the correct entry is 530. Repairs to cash 530. Wrongly debited to machine as 150. 150. What would be the wrong entry? Machinery account debit dash account debit to cash account. Perfect. Machinery dash to cash. भी नहीं समझ रहा है किधर तो प्लीज आस्क, डोंट जस्ट ब्लाइंडली कॉपी. Can you explain the third one? Yeah, third one में 530 spent on, sorry, discount of 25 allowed by Shah to us was posted to their credit. What is the correct entry for discount allowed by Shah to us? अपने को डिस्काउंट अलाउ किया उन्होंने, तो हमने रिसीव किया. discount receipt. शाह टू डिस्काउंट रिसीव. शाह टू डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना करेक्ट एंट्री, दैट इज 25. It was wrongly debited to their account, posted to their debit, posted to their credit, sorry, posted to the credit. Shine को give the credit से. तो क्या होगा, रॉन्ग एंट्री क्या होगा? Cash account debit 50 rupees to Shah and Co to discount receipt. बराबर. This is your wrong entry. Dash to Shah to discount. Reverse discount Shah to dash, rectify discount to suspense. Ruchi done, Ruchi. Tallied, suspense tallied. We have to make suspense account also. Tallied suspense. So the total of the suspense account is 1510. 1510. 1510. Yeah. Barabar. 1510. Total of suspense account is 1510. Tally is on 1510. Rectified entry नीचे दिया है, solution is right. Just check it. Tell me if you don't get anything. Mila? Done? Isha finished? Aya finished? Tallied suspense. So can you tell me the fourth one, the wrong entry? Fourth one. An amount of 730 paid to Chetan was wrongly credited to Lalit as 250. What is the correct entry for amount paid to Chetan? Then to cash. Chetan to cash 730. It was wrongly credited to Lalit. मतलब ललित को क्रेडिट दे दिया. Is there any mistake in cash? Think. Is there any mistake in cash? No. Why? Debited credited मतलब posting error है, तो वही account में गड़बड़ है. Cash तो right ही था, posting में गड़बड़ है तो other account is wrong ना. So instead of Chetan, we wrote it in Lalit, and that too on the credit side. Wrong entry will become dash to cash to Lalit. Cash में it is 730. Lalit में it will be आएगा
250. Dash will become 980. Reverse and rectify. Posting error है तो हमेशा other The first one again. first one. An amount of 840 received from Singh was posted to their debit as 50. So amount received from Singh. So what is the correct entry? Cash to Singh. कितना है cash to Singh? 840 है. 840. पोस्टिंग एरर है, पोस्टेड टू द डेबिट. तो किस में होगा पोस्टिंग एरर? सिंह में कि कैश में? Cash. कैसा कैश? पोस्टिंग एरर. कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो कैश अकाउंट राइट ही है ना. Yes, इज yes. द अदर अकाउंट. सिंह में गड़बड़ है. तो सिंह को क्रेडिट देने के बदले डेबिट दे दिया, तो दिस इज द रॉन्ग एंट्री. तो कैश सिंह टू डैश, कैश सिंह टू डैश, रिवर्स डैश टू Singh to cash, rectified is suspense to Singh. Okay, thank you. Finished. Last sum, illustration 7. Illustration 7, page number 262. Illustration 7, page 262. Wrong reverse, correct, rectified. Illustration 7, page 262. Page 262, standard textbook. Illustration 7, page 262. Come on. Last sum. We'll do those 3 sums of notebook, अपना class book, class textbook, when I do that before trial balance part revision. Okay, set note वाला part. इतना करो अभी, more than enough. And the same portion you have for the test. Illustration 7, page 262. Come on, solve that. What is purchase day book? Purchase day book is purchase book. Sales day book is sales book. Day book मतलब journal, daily, chronological order, date wise record na transaction. Day book means journal. Last sum number 7, illustration 7. So in the first part, they have written that Which is a purchase of goods from Sachin for rupees 3,000 was entered in the sales book. However, Sachin's account was correctly credited. Be wrongly, right? नहीं करेक्टली ना. सचिन तो क्रेडिट ही होना था ना. Okay. वैसा. Sir, can Purchase. you Correct. You were talking from the sales book point of view. नहीं. करेक्ट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट एंट्री होना चाहिए परचेज टू सचिन. रॉन्ग एंट्री में डैश टू
सेल्स टू सचिन, दोनों को क्रेडिट दे दिया. Yes, what were you asking? So can you explain the ledger entry in suspense account for the second transaction? Second transaction. Entries repair to machine to suspense, right? Yes, sir. So how will you split it? Repair to machine Repair to machine. and repair to suspense. So how much is repair to machine? 150. How much Yeah. is repair to suspense? 380. Yes. तो सस्पेंस में बाय रिपेयर आएगा ना 380. Okay, thank you. समझा? पोस्टिंग स्प्लिट नॉर्मल करते Yesterday homework में भी वही mistake. सेम गड़बड़ यू डिड इन द होमवर्क. सम आई डिस्कस द होमवर्क अभी. सेम गड़बड़ इन होमवर्क आल्सो. समझा ना अभी? Yes, sir. Split it, normal split. Sir, in the fourth one, that is Lalit account, Chetan account to suspense account. Lalit, Chetan to suspense, yes. So Lalit to suspense, Chetan to suspense. And Chetan to suspense. हाँ, suspense में by Lalit, by Chetan. Suspense में by Lalit, by Chetan. We will be sending you important sums today from the chapter. Go through them perfectly. Write and solve at least 4 to 5 problems. Write and solve. Hitanshi, you are logged in from another account. Hitanshi, you have entered from another account. Sir, my computer laptop shut down Okay. automatically. करो चलो. Illustration 7, last sum quickly. We discuss the homework. 2 minutes. And all for the day. Sir, for first issue, what will be the wrong entry? For the first one, the wrong entry. पहले correct entry क्या है वो बताओ मुझे. Purchase to Sachin. It was entered in sales book, but Sachin's account was correctly credited. सोचो अभी sales book में डाला लेकिन सचिन को भी credit किया. Dash sales to Sachin. Perfect. Dash to sales to Sachin. खाली sales book में डाला होता तो it would have been Sachin to sales. लेकिन वहां पर क्या दिया, सचिन को डेबिट नहीं किया, सचिन को बराबर से क्रेडिट किया. तो फिर डैश टू, दोनों क्रेडिट हो गए. सेल डैश टू सेल्स टू सचिन. सेल्स बुक में लिखा, फिर सचिन को डेबिट करने के बदले क्रेडिट ही दिया. वो इफेक्ट बराबर था उसका. ये वाला रॉन्ग था सेल्स का. तो डैश टू सेल्स टू सचिन. रिवर्स सचिन सेल्स टू डैश, रेक्टिफाइड सचिन टू सस्पेंस. सॉरी, रेक्टिफाइड वुड बी सेल्स परचेज टू सस्पेंस. Sales purchase to suspense. Getting it? So what's the wrong entry for the fourth one? For the fourth one. Fourth one. Fourth one is what? Cash 5,000 paid to Sadik. What is the correct entry? Added to cash. Sadik to cash. It was credited to Sabir as 1,800. Think about it. गड़बड़ किसमें? Was credited to Sabir. Credited to Sabir. मतलब cash to Sabir. नहीं, कैश क्यों डेबिट कर रहे हो? पोस्टिंग एरर है. डेबिटेड So क्रेडिटेड. dash to cash to Sabir. डैश टू कैश टू सब. पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड मतलब पोस्टिंग एरर. वन अकाउंट इज रॉन्ग. दैट सादिक का सबीर हो गया एंड दैट टू विद रॉन्ग अमाउंट. सो करेक्ट एंट्री होगा इसका फोर्थ वन. अगर बाकी लोग को नहीं आया देख लो वापस. फोर्थ वन करेक्ट एंट्री इज सादिक टू कैश. दैट इज 5,000. Sadik to cash is 5,000. Sadik to cash is 5,000. And wrong entry has become, it was credited to Sabir. मतलब क्या करना था? कैश बुक में लिखा तुमने बाय सादिक. सादिक में लिखना था टू कैश. सादिक में ना लिख के सबीर में लिख दिया बाय कैश. डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टिंग है.
That is the other account. Cash book would be right. So wrong entry would become dash to cash to Sabir. This is 5,000 correct. This has become 1530. This is 6530. Dash is 6530. करो. आ रहा है ये वाला? Riya Palan, getting it? Riya Palan. Sir, omitted to Number? post मतलब we didn't enter in his account only. In the account. So Posting two dash. Two, one partial omission. Dash. One account it is dash. Preet, all clear? Preet Vora. सर सस्पेंस अकाउंट बनाने का है इसमें. सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना है इसमें. डोंट मेक सस्पेंस. खाली रॉन्ग रिवर्स करेक्ट. हो गया? रुचि, Ujjan, Virali, Rutwa, done? So can you explain me Which one? undercast and overcast overall how to do? See, whenever you have casting error, totaling error, that is casting error, totaling error जो भी है, तो उसमें कभी आपका correct wrong reverse entry नहीं होगा, वो चीज clear है पहले. अब जब भी कोई totaling error होता है तो it is going to affect just one account. ये वही account में totaling का गड़बड़ है, बराबर? So it is always going to be a one-sided error. There is always going to be suspense. Now, suppose I tell you purchase book undercast. What is the normal balance of purchase? Purchase to creditor. Normal balance of purchase. Debit. Or credit? Debit. The purchase book undercast. So it will affect purchase account. Purchase book means total purchase account को affect करेगा. So purchase is undercast. मतलब debit कम हो गया है ना? Debit को बढ़ाना. Debit को बढ़ाना है तो क्या देने का उसको? Debit. Purchase to suspense. अगर यही मैं बोलता परचेज बुक ओवरकास्ट, मतलब ज्यादा हो गया. नॉर्मल बैलेंस क्या होता है परचेज का? डेबिट होता है. और ज्यादा हो गया मतलब डेबिट ज्यादा हो गया, उसको कम करना है तो गिव इट अ क्रेडिट. तो सस्पेंस टू परचेज. फंडा क्या है? नॉर्मल बैलेंस ढूंढो पहले उस अकाउंट का. सपोज आई टेल यू कैपिटल अकाउंट ओवरकास्टेड. व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैपिटल? Credit. ओवरकास्टेड मतलब ज्यादा हो गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया. अभी उसको कम करना है, क्रेडिट को कम करना है तो गिव इट अ डेबिट. कैपिटल टू सस्पेंस. यही मैं आपको बोलता है कि कैपिटल अंडरकास्ट हो गया. कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है. तो क्रेडिट नॉर्मल बैलेंस होने ही वाला है. वो अंडरकास्ट हो गया मतलब कम हो गया, क्रेडिट कम हो गया. क्रेडिट को बढ़ाना है तो गिव इट अ क्रेडिट. क्रेडिट को बढ़ाना है गिव इट अ क्रेडिट. क्रेडिट को कम करना है गिव इट अ डेबिट. डेबिट को बढ़ाना है गिव इट अ डेबिट. डेबिट को कम करना है गिव इट अ क्रेडिट. तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा? सस्पेंस टू कैपिटल. समझा? फर्नीचर अकाउंट ओवरकास्टेड. व्हाट इज द नॉर्मल बैलेंस ऑफ फर्नीचर? Furniture. नॉर्मल बैलेंस ऑफ फर्नीचर इज डेबिट. Debit. ओवरकास्टेड मतलब ज्यादा हो गया, डेबिट ज्यादा हो गया तो उसको घटाना है तो व्हाट विल डू? Credit. क्रेडिट दोगे फर्नीचर को ना, तो एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू Suspense to furniture. फर्नीचर. और यही अंडरकास्ट हो गया तो Furniture to suspense. फर्नीचर टू सस्पेंस. समझ में आया? परचेज रिटर्न अंडरकास्ट. बोलो क्या करोगे? परचेज रिटर्न अंडरकास्ट. Purchase return to suspense. अरे परचेज रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? Credit.
तो अभी वो कम हो गया, उसको बढ़ाना है। Suspense to purchase retail. और क्रेडिट दोगी तो बढ़ेगा ना, डेबिट दोगी तो बेचारे को और कम कर देगा, पहले से ही कम है। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न होगा, और परचेज रिटर्न ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब क्रेडिट ज्यादा हो गया, उसको कम करना है, गिव इट अ डेबिट, तो फिर परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। नेचुरल बैलेंस देख लो पहले, फिर डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, डेबिट को घटाना है तो क्रेडिट, क्रेडिट को घटाना है तो डेबिट। चेक द होमवर्क सम, wait, otherwise after the lecture I'll explain myself. होमवर्क सम था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 8 and 9, चेक कर लो फटाफट। In the fifth one, in illustration 7, we straight away have to pass the main entry. Fifth one, illustration 7 में टोटल है ना, हाँ देखो, हाँ सीधा मेन एंट्री, सीधा 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 रेक्टिफाइड एंट्री, टोटल 3150 का 5130 हो गया, 153 difference of 1620. 1620 से क्या हो गया, कम हो गया, समझा ईशा? परचेज रिटर्न कम हो गया है तो क्रेडिट कम हो गया, उसको बढ़ाना है तो गिव इट अ क्रेडिट, सस्पेंस टू परचेज। चेक द होमवर्क आंसर्स फटाफट। सम नंबर 7 था ना, 7 और 8। Seventh one, debit side of purchase account under cast, your rectified entry is purchase to suspense 100 rupees, purchase to suspense 100. Second, 100 being monthly total of discount allowed to customer were credited to discount account in the ledger. This was a bit tricky, totaling error ही था, but discount को debit करने के बदले क्या कर दिया, credit कर दिया। तो अभी क्या करो, debit करो उसको, तो discount allowed to suspense, that will be 200 rupees. Is that right? Discount allowed to suspense 200 rupees. ये समझा सबको? ओके, डेबिट के बदले क्रेडिट दे दिया था ना, अभी डबल डेबिट दिया, तो कास्टिंग एरर था, तो नो रॉन्ग रिवर्स करेक्ट एंट्री, स्ट्रेट अवे रेक्टिफाइड। देन In the second one, I have written discount allowed 100, discount received 100 to suspense account 200. कैन राइट दैट आल्सो, ये भी चलेगा, ओके, बट बेटर इट इज इफ यू राइट ओनली सेम डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वही डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है, तो सेम डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ऐसे यू कैन राइट। Okay. तो या डिस्काउंट अकाउंट भी चलेगा, डिस्काउंट रिसीव लिखा तो भी चलेगा, दैट इज अनदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग के, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करते हैं, बोथ आर फाइन, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव टू सस्पेंस या डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस, दोनों चलेगा। An entry for goods sold of 1022 to Mihir was posted to his account as 120. Correct था Mihir to sales 102, wrong is Mihir में 120 to sales 102 to dash 18. Reverse dash sales to Mihir, rectified is suspense to Mihir 18 rupees. Suspense to Mihir 18 rupees. 26 rupees appearing in the cash book as paid for purchase of stationery for offices not posted in the ledger. Correct entry stationery to cash 26. Wrong entry is dash to cash, reverse cash to dash, rectified suspense to stationery, stationery to suspense. Rectified is stationery to suspense. समझा? स्टेशनरी में पोस्ट नहीं किया था, कैश में किया था। 275 paid by Mihir were credited to Mithali's account. Correct entry was cash to Mihir. Wrong is cash to Mithali. Reverse is Mithali to cash. Rectified is Mithali to Mihir. Mithali to Mihir. That's your rectified entry. Suspense tallies on what amount over here? I think suspense tallies on 326. 326. Suspense tallies on 326. Perfect. Got it? Next one, 8th one, cash received from Ramakant 8,000 posted to his account as 6,000. Correct था cash to Ramakant 8,000. Wrong is cash 8,000 to Ramakant 6,000 to dash. Reverse dash Ramakant to cash. Rectified is suspense to Ramakant 2,000. Suspense to Ramakant 2,000. Got it? Credit purchase from Naman 7,000 were recorded in sales book. However, Naman's account was correctly credited. So correct entry, the purchase to Naman 7,000. Wrong is dash to Naman to sale. Reverse is sales Naman to dash. Rectified is Naman to suspense 14,000. Naman to suspense 14,000. Is that clear? Naman to suspense 14,000. Return inward book overcast by 1,000. Return inward का normal balance क्या होता है? Debit.
डेबिट ज्यादा हो गया, उसको घटाना है, तो गिव इट अ क्रेडिट. Suspense to return inward. Suspense to return inward 1000. Got that? Suspense to return inward 1000. Total of sales book 10,000 was not posted in sales account. Total post नहीं किया मतलब क्या हो गया? Overcast की undercast. 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 तो suspense to sales. Sales has got credit balance, कम हो गया, उसको बढ़ाना है, give it a credit. The suspense to sales 10,000. Suspense to sales 10,000. Machinery purchase for 10,000 was posted to purchase account as 5,000. इसमें गड़बड़ हुआ था, ये ध्यान से देख लो. करेक्ट एंट्री होना चाहिए आपका मशीनरी टू कैश 10,000. रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? इट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 5. तो रॉन्ग एंट्री में परचेज 5 है, कैश तो राइट ही है. डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड मतलब लेजर का एरर है, बीच में डैश. दिस इज द रॉन्ग एंट्री. Purchase dash to cash. Reverse is cash to dash to purchase, and rectified is machinery to purchase to suspense. Machinery to purchase to suspense. इसका पोस्ट कैसे करोगे? Machinery to purchase, machinery to suspense. तो suspense में buy machine 5,000. That will be your posting. Suspense में buy machine 5,000. Is that clear? Sir, can you tell the second one again? Second one was credit purchase from Naman were recorded in sales book, but Naman's account was correctly credited. Correct the purchase to Naman 7,000. Wrong will be dash to Naman to sale. Sales book में डाला और Naman को भी credit दे दिया, मतलब दोनों credit हो गए. अभी किया ना हमने first sum में, वैसा ही था. Dash to sales to Naman, Naman sales to dash, and Naman to suspense 14,000. So, sir, the It will be rectified one will be sales Purchase, purchase to sales. Oh, sorry. Oh, my bad. Rectified entry would be sales purchase to suspense. Yeah. Sales purchase to suspense, not Naman to suspense. Naman cut हो जाएगा. Sales purchase to suspense. Sales purchase to suspense is your rectified entry. 14,000 and 14. Yeah. Bolo. Clear? That's it. We stop. Next lecture, new topic and Tuesday test. Okay. डाउट से तो लेट मी नो, होमवर्क आ जाएगा, कल शाम तक करके भेज देना, अदरवाइज यू कैन